Good evening, dear learners. Welcome back to another exciting literary journey through the witty and whimsical world of Alexander Pope. In our last class, we explored the tension rising in the game of ombre as the cards danced and clashed in poetic brilliance. Today, we dive into the heat of the game, beginning from the line number 54, where the battle intensified with bold metaphors and dazzling language. Get ready to witness how Poe brilliantly transforms a simple card game into an epic mock heroic warfare and filled with irony, grandeur, and clever satire. So let's unfold each line with detailed meanings, literary devices, and the critical insight so that every word penned reveals its sparkle and depth. So let's begin. So the first line for this class is him Bestro followed, but his fate more hard. So another card character, Besto, follows into the battle but has worse luck. Fate more hard refers to worse destiny or outcome. So Besto being a strong card in the game, but it has a worse luck, right? Gained but one trump and one plebeian card. So he the besto he only manages to win one trump card and one ordinary card. So a trump is a suitor, superior suit card in a card game. Plebeian refers to a common or low rank card, right? So with his broad sabre next, a chief in ears. It's a kind of sword, and chief in ears refers to an elderly leader. So an old warrior appears holding a large sword, right? So there is a imagery of vivid images of an aged warrior with a sword. The hoary majesty of spades appears. Hoary means a gray with age, right? And majesty of spades refers to the king card from the suit of spades. So the king of spades, old and gray, enters like a majestic ruler, right? Puts forth one manly leg to sight revealed. Manly leg refers to a symbol of strength. Revealed means showed. So the king, the majestic king, he dramatically lifts his robe to show one strong leg, right? So the tone is mock heroic, that this is a serious tone applied to a humorous, a trivial act, right? The rest his many colored robe concealed. So his colorful robe hides the rest of his body, so it highlights the robe's vibrant appearance, right? The rebel knave who dares his prince engage. Knave is it's like a jack card or a dishonorable man. Engage means to challenge or to confront. So the knave, the jack card, dares to fight his royal superior, right? So the a card character treated like a real rebel. It is rebel, it is daring. Proves that just victim of his royal rage. So the knave is punished as deserved by the enraged king. Just victim refers to a rightful or deserving target. रॉयल रेज का तो आपको मतलब पता ही है. रॉयल मीन्स किंग, रॉयल रेफर्स टू द किंग, सो इट्स किंग्स एंगर, राइट? Even mighty Pam, that kings and queens overthrew. So Pam is actually a high card in the game of Lu. यहाँ पे देखो reference भी है game का. So because even the powerful Pam, a trump card that could defeat kings and queens, right? So and mowed down armies in the flight of Lu. So Pam, the mighty card, the trump card, destroyed many opponents, many kings and queens in the card game Lu. Sad chance of war, now destitute of aid. Uh,
destitute का मतलब होता है lacking, so destitute of aid का मतलब हो गया lacking or without aid basically help को बोल सकते हैं हम. So the misfortune of the battle is that no one helps him, right? Falls undistinguished by the victor's fate. So undistinguished का मतलब हो गया not recognized, you can say not recognized, and victor is winner. So the Pam falls unnoticed and defeated by the victorious fates, right? So यहाँ पर ये पूरा एक पैसेज खत्म होता है. So through these lines, we can see that the battle continues in the mock epic card game. Besto, the card warrior, enters the fray but meets a harsher fate, right? Winning only a trump and or a low ranking card. Then comes the grand and aged king of spades, right? It's a majestic figure with a colorful robe. He reveals one strong leg as a sign of readiness for battle. The rebellious knave Jack challenges him but is quickly defeated by the king's wrath, king's anger, right? Even the mighty Pam, once powerful enough to defeat kings and queens in the card game of Lu, is now helpless and unsupported. उसको बोला ना कि अनडिस्टिंग्विश्ड है, तो ये काफ़ी अननोटिस्ड है, अनसपोर्टेड है इन द बैटल. इन अ ट्विस्ट ऑफ आयरनी, Pam falls without honor or recognition, struck down by victorious fate. Right? Let's move to the next lines. Thus far, both armies to Belinda yield. Yield refers to yield means surrender. So until now, all the cards armies surrender to Belinda, right? So this is a mock epic simile equating a woman's card victory to war glory. There is a hyperbole that is overstating Belinda's power, right? Now to the barren fate inclined in the field. It means now the fortune begins to favor the baron, right? So inclines the field का मतलब यहाँ पर हो गया tips that outcomes in his favor now. So there is a personification. Fate is imagined as taking sides, ठीक है? And foreshadowing is there. It suggests a turning point, like his warlike Amazon, her host invades. So Belinda attacks Baron like a fierce Amazon warrior. So Amazon basically, ये वो Amazon का जंगल नहीं है, ना ही वो वेबसाइट है जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं. Amazon is basically a mythical female warrior. तो उसकी तरह ही बेलिंडा भी अब अटैक कर रही है. Host refers to the enemy troops or enemy cards. So Belinda, like Amazon, attacks Baron like a fierce Amazon warrior, right? So there is a simile, there is an illusion that compares Belinda to Amazon. Epithets is there. Warlike Amazon is a descriptive phrase, right? The imperial consort of the crown of spades. The imperial consort refers to the royal wife, or we can say the royal queen. So Belinda, is the queen of spades suit depicted as royalty, right? The club's black tyrant, first her victim died. Tyrant का मतलब होता है cruel ruler, right? So the king of clubs, the black tyrant, right? ब्लैक टायरेंट जो है वो क्रूअल रूलर है, जो किंग ऑफ क्लब्स है बेसिकली, इज द फर्स्ट टू फॉल टू हर, राइट? स्पाइट ऑफ हिज हॉटी मियन एंड द बार्बरस प्राइड. हॉटी का मतलब होता है प्राउडी expression or proudly bearing. Barbarous pride refers to the savage arrogance. So despite his arrogant appearance and savage pride, he is defeated. Who? Baron is defeated, right?
Next line, what boots the regal circle on his head? Boots refers to benefits or helps. Regal circle का मतलब हो गया crown. So, what good is a crown if it can't protect him? Right? So there's a question like, what good is a crown if he can't protect him? So here, Pope Alexander Pope ridiculous empty symbols of power that fails in moment of real challenges. The crown does not guarantee victory. He wants to say that the crown does not guarantee victory. His giant limbs in state unwieldy spread. Unwieldy का मतलब हो जाएगा clumsy, or we can say not easily managed. In state refers to in a formal or royal manner. So the defeated king's body uh, imagined as that of a giant, right? Giant. So the defeated king's body is spread out in a ceremonious but awed fashion. It symbolizes how grandeur can become ridiculous after defeat, right? That long behind his trail, his pompous robe. ट्रेल्स का मतलब हो गया ड्रैग्स. पॉम्पस का मतलब होता है ओवरली शोई और ग्रैंड, एग्जैजरेट करना किसी चीज़ को. सो द किंग्स रॉ वंस अ सिंबल ऑफ मेजेस्टी, राइट, बट नाउ it drags behind him. His exaggerated, his pompous display of royalty now looks foolish, right? And of all monarch only grabs the globe. So grabs the globe का मतलब हो गया holds the globe. It's a symbol of globe power or rule. So despite his appearance and symbol of universal monarchy, that is globe, he achieves what? He achieves nothing. So Alexander Pope criticizes here that how superficial grandeur like robes or maybe its crowns. So superficial grandeurs can't hide powerlessness. So this whole passage mocks the grandeur of aristocracy and warfare, and it continuing Pope's mock heroic tone. It's a simple card game is elevated into a grand war, and it's filled with warriors, queens, tyrants, and monarchs. But the exact exaggeration is humorous. The pomp, the pomp, the pride, or the majesty of cards mirrors the vanity of the upper class. So here we can see that Alexander Pope ridicules the false superiority and pride of nobles, right? Showing that despite appearances, power can be hollow, right? Now the next stanza is, the Baron now his diamonds pour apace. Apace का मतलब होता है quickly और we can say rapidly. Pours का मतलब यहाँ पर हो गया throws out in a large quantity. So the Baron throws his diamond card. अपना diamond card उसने throw किया है rapidly and aggressively because he was trying to win the game, right? So there is a metaphor of diamonds. So diamonds here, one second. Diamonds refers to diamond refers to here. Sorry, diamond symbolizes playing cards, but also suggest wealth and grandeur. So diamond basically यहाँ पर symbol playing cards नहीं है. Through the diamond card he is representing his wealth and his grandeur, right? The embroidered king who shows but half his face. So the embroidered image of the king on the card is partially visible. Half दिख रहा है ना, तो partially visible है. Perhaps speaking from behind others or held in a specific manner. राइट, तो एम्ब्रॉयडर्ड का यहाँ पर मतलब हो जाएगा डेकोरेटेड विथ नीडल वर्क.
सो ये आप क्या मान सकते हो कि ये जो कार्ड्स हैं ये काफ़ी ऑर्डिनेटेड है, काफ़ी सजे सजे हुए, काफ़ी महंगे कार्ड्स हैं। ये नॉर्मल जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं वो कार्ड नहीं है, ये एम्ब्रॉयडर्ड कार्ड है। और इसमें जो डायमंड वाला जो कार्ड है, जो बैरन ने अब शो किया जिसपे किंग है, वो पार्शियली ही दिख रहा है, राइट। सो यहाँ पर इमेजरी बनती है। इमेजरी एक्चुअली क्रिएट्स अ विविड इमेज ऑफ डेकोरेटेड प्लेइंग कार्ड्स। सो अब पर्सोनिफिकेशन भी है यहाँ पर देखा जाए तो। द किंग इज डिस्क्राइब्ड एज दो ही इज शोइंग हिज फेस लाइक अ रियल पर्सन। तो जब कोई नॉन लिविंग चीज़ को हम एज अ ह्यूमन बींग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट लाइन, एंड हिज रेफिल्जेंट क्वीन विथ पावर्स कंबाइंड। रेफिल्जेंट का मतलब हो गया यहाँ पर शाइनिंग ब्राइटली। पावर्स कंबाइंड का मतलब हो गया कंबाइंड पावर्स, ये तो बहुत ईजी है। सो द रेडियंट, द शाइनिंग ब्राइट क्वीन, द रेफिल्जेंट क्वीन, the refulgent queen in alliance with the king uses their combined powers in the card battle, right? Of broken troops, an easy conquest find. So they easily defeat the broken or the scattered troops, implying the enemy cards or players are weak or so disorganized. तो यहाँ पे ये जो है ना ब्रोकन ट्रूप्स, इसका मतलब है डिफीटेड और डिसऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस। कॉन्क्वेस्ट तो आपको पता ही है, डोमिनेशन और विक्ट्री। So these cards can easily defeat the broken or scattered troops, implying the enemy cards or players are weak or disorganized, right? Clubs, diamonds, hearts in wild disorder scene. वाइल्ड डिसऑर्डर्ड सीन का मतलब हो गया इट्स अ कंप्लीट chaos और डिसऑर्डर, अ लैक ऑफ ऑर्डर, राइट। सो यहाँ पर ना, यहाँ पर हमको क्लब्स, डायमंड्स और हार्ट से इनमरेशन देखने को मिलता है। ये भी एक लिटरेरी डिवाइस होता है, बिकॉज देयर इज अ लिस्टिंग ऑफ कार्ड सूट्स, ठीक है। एंड दीज कार्ड रिप्रेजेंट्स कन्फ्यूजन एंड इंटेंसिटी ऑफ द गेम। सो द कार्ड्स ऑफ डिफरेंट सूट्स, the which are clubs, diamonds or hearts, they all are scattered all around in a chaotic manner, right? Because they are disorder, right? With wrongs, promises, promiscuous strew the level green. सो थ्रॉन्ग्स promiscuous का मतलब होता है मिक्स्ड क्राउड्स। हेयर द कार्ड्स फ्रॉम ऑल सूट्स विदाउट ऑर्डर कैन बी सीन हेयर, सो इट्स अ promiscuous। स्ट्रॉ का मतलब हो गया यहाँ पे, एक्चुअली स्ट्रॉ जो वो अर्काइक फॉर्म है स्ट्रू का, इट मीन्स टू स्कैटर, राइट। लेवल ग्रीन रेफर्स टू अ फ्लैट ग्रीन सर्फेस। जो मैंने आपको बताया था ना, जो टेबल है, गेमिंग टेबल है, वो ग्रीन कलर का है, तो ये उसको लेवल ग्रीन बोला है। सो क्राउड्स ऑफ कार्ड्स, mixed crowds of cards lie scattered over the green table surface and often covered in the green cloth, right? सो यहाँ पर हमको विजुअल इमेजरी देखने को मिलती है, बिकॉज इट हेल्प्स अस सी द स्कैटर्ड कार्ड्स ऑन द ग्रीन टेबल। जब ऐसे पोएट ने लिखा है ना, तो हम अपने माइंड में कहीं सोचते हैं कि एक ग्रीन टेबल है जिसका जो सर्फेस है वो ग्रीन है, और फिर कार्ड स्कैटर्ड हैं डिफरेंट सूट्स के, हार्ट, क्लब्स, डायमंड्स, ठीक है। प्रोमिस्कुअस जो है ये बेसिकली एक सिंबल है दैट सर्टनली सजेस्ट मॉरल डिसऑर्डर, possibly mocking the chaos of vanity and society here. So ये बहुत important है। Next line, thus when dispersed a routed army runs. So just like a defeated, the dispersed मतलब scattered. So just like a defeated army runs in a disorder, similarly these cards are representing as soldiers are scattered after defeat, right? Rooted army का मतलब यहाँ पर हो जाएगा military force that has been defeated is fleeing, right? Of Asia's troops and Afric's sable sons. So Afric's sable sun का मतलब हो जाएगा the dark skinned people of Africa, right? अभी क्या है कि ये उस टाइम पर ऐसे बोल दिया गया,
अफ्रीक सेबल सन मतलब अफ्रीका के डार्क स्किन लोग. बट नाउ वी कैन कंसीडर्ड इट एज रेशियल आउटडेटेड लैंग्वेज. अभी आप हम अगर हम ऐसे बोल दें किसी को कि ये ब्लैक है, ये डार्क है, तो वो रेसिज्म में चला जाएगा. एंड दैट इज़ नॉट गुड. एथिकली ये ठीक नहीं है किसी को डार्क बोलना या ब्लॉन्ड बोलना या कुछ भी बोलना, लेकिन उस समय पर इसको बोला गया था. नाउ वी कैन कंसीडर इट एज अ रेशियल आउटडेटेड लैंग्वेज, राइट. सो यहाँ पर मतलब लेकिन इसका यही है. सो ऑफ एशियाज ट्रूप्स इन Afric's sable sons, it refers to the soldiers from Asia and Africa running away in the chaos of defeat. And this line actually reflects the poem's 18th century's imperialist lens. उस समय पे क्या है, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई हुई थी एशिया में भी, कई सारी कंट्रीज़ में, और अफ्रीका में भी. तो जब भी इनके वॉर्स होते थे तो ये उसमें अपने जो जहाँ जहाँ इन्होंने कॉलोनी बनाई थी वहाँ से लोगों को ये एज वॉरियर एज सोल्जर्स अपने साथ लेकर जाते थे, वहाँ के लोगों को. तो अफ्रीका के लोगों को भी लेके जाते थे. अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कई सारी कंट्रीज़ ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, और इंडिया सिर्फ इंडिया नहीं, एशिया में भी कई सारी कंट्रीज़ थी जो कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी. तो बेसिकली ये उसका रेफरेंस है इम्पीरियलिज्म का. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है देखा जाए तो. इस पर आप स्टार लगा लो, ऐसा कोई भी साइन बना लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट लाइन इज with like confusion different nation flies. So with like confusion का मतलब हो गया with in similar confusion different nation refers to the people from various countries. Fly का मतलब यहाँ पर हो गया run away or flee. So in similar confusions soldiers, or we can say the cards from different nations, are seen fleeing the scene, right? So there, if we talk about the literary device in this lies, that is parallelism. Parallelism basically होता है कि it continues the analogy between the battlefield and the card game, right? Of various habit of or and of various dye. Habit basically clothing की बात हो रही है, dye मतलब color. So they wear different clothes, ठीक है, एंड हैव डिफरेंट स्किन कलर्स. तो ये जो सोल्जर्स हैं जो कि एशिया और अफ्रीका से आए हैं, जो इनकी बैटल फील्ड में हैं, जो कार्ड्स को साथ इनको सिंपलाइज किया गया है, तो इन्होंने डिफरेंट क्लोथ्स पहने हैं. ठीक है, डिफरेंट नेशन से आए हैं, डिफरेंट वेरियस हैबिट्स यानी कि डिफरेंट क्लोथिंग है इनकी, प्लस डिफरेंट डाइज यानी कि उनके वेरियस यानी कि डिफरेंट कलर्स, उनके स्किन कलर्स की बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है. सो द पियर्स्ड battalions disunited fall. पियर्स्ड मतलब जो wounded है, पियर्स हो गए मतलब जिनको, जो घायल हो गए, इंजर्ड हो गए हैं. बटालियन का मतलब हो गया लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. तो जो लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर जो कि अभी घायल है, wounded है. disunited, so it means they are not united anymore, they are separated. It means they are no longer working together, right? So the pierced, or we can say the injured, or we can say wounded groups of soldiers fall apart and are now defeated, right? In heaps on heaps one fate overwhelms them all. Heaps on heaps का मतलब हो गया pile bodies, or we can say the pile cards. Overwhelmed का मतलब हो गया overpower. So the fallen lie in the piles, all suffering the same fate, and that is a complete defeat, right? So this passage uses extended metaphor and mock heroic imagery to describe a card game as if it were a grand battlefield, right? The baron, a symbol of male vanity and ambition, aggressively plays his diamond cards, right? And supported by kings and queens. The card suits, club, diamond, and hearts are shown in the battlefield, right? They are shown in a chaotic armies clashing on a green battlefield. The green battlefield is the card table. As the game progresses, Alexander Pope likens the disordered scene
to a rooted army, right? And where soldiers from Asia and Africa dressed in different clothes, right? They are in different clothes and various appearances, flee in panic and confusion. So the battlefield, or we can say the table, is covered with the fallen cards, the defeated cards, and it's symbolizing the soldiers struck down in heaps, right? All overwhelmed by a common fate, that is defeat. सबके सबका एक ही fate है, common fate है, वो है defeat. So though through this exaggerated comparison, Pope satire how aristocracy treats trivial events like a card game with the seriousness of war. It mocks the vanity, pride, and artificiality of high society, particularly in the matters of love, appearance, and social rivalry. Right? Now we'll go through the last stanza of our this class is the knave of diamonds tries his willy arts. So knave basically मैंने आपको पहले बताया था कि जैक है, a playing card representing a jack. Wily arts refers to clever tricks or strategies. So the knave, the jack card of diamond. आपको पता होगा कि ताश के पत्तों में 4 सूट्स होते हैं, हार्ट, डायमंड, और भी 2 और होते हैं, स्पेड होता है एक, ऐसे मुझे याद नहीं है पर होते हैं, तो उसमें से एक डायमंड भी होता है, ठीक है, और एक क्लब भी होता है. सो द नेव ऑफ डायमंड मतलब जो जैक कार्ड है डायमंड का, यूजेस, क्या यूज़ कर रहा है वो, अपने वाइली आर्ट्स यूज़ कर रहा है. इट मीन्स ही यूजेस हिज कनिंग स्ट्रैटेजी टू ट्राई एंड विन द गेम, राइट? So there is a personification. The card is given to human traits, that is deceit and tragedy. ये जो वाइली आर्ट्स है ना, धोखा देना, स्ट्रैटेजी करना, ये तो ह्यूमन नेचर है. तो कार्ड तो बेसिकली क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो उसको इन्होंने पर्सोनिफाई किया है. एंड विंस, ओ शेमफुल चांस, द क्वीन ऑफ हार्ट्स. तो ओ शेमफुल चांस से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं a regrettable stroke of bad luck or fate, right? So shockingly, the knave of diamond defeat the noble queen of hearts. जो knave of diamond है ना, उसने बहुत ही shameless तरीके से अपने wily arts यूज़ करते हुए queen of hearts को defeat कर दिया है. And this is seen as an unexpected and disgraceful turns of events, right? सो जो ये ब्रैकेट में लिखा है ना, ओ शेमफुल चांस, दिस एड्स अ ड्रामेटिक एम्फोसिस हेयर. At this, the blood, the virgin's cheek forsook. Forsook means left or abandoned. So, the Belinda, ये दो द वर्जन से जो हम डिफाइन कर रहे हैं, ये बेलिंडा को बोल रहे हैं. बेलिंडा अभी उसको हरा दिया क्वीन ऑफ हार्ट्स को, तो बेलिंडा द वर्जिन टर्न्स पेल विथ शॉक एंड डिस्पेयर एज हर क्वीन इज कैप्चर्ड. तो बेलिंडा जो है उसकी क्वीन कैप्चर्ड हो गई है, तो वो बड़ी शॉक्ड हो गई, पेल हो गई है वो, ठीक है. अ लिविड पेलनेस स्प्रेड ओवर ऑल हर लुक. तो जो उसका जो फेस है ना, हर फेस बिकम्स पेल with a bluish tint, right? And it shows her terror, the terror in her heart, and the fear, the terror and fear in her heart. So livid paleness का मतलब यही है, deathly और bluish whiteness of the skin. जैसे डर से, शॉक से ये ब्लू हो गई इसकी स्किन, ब्लूइश वाइटनेस हो गई है, मतलब थोड़ी सफ़ेद थोड़ी सी नीली, राइट? शी सीज एंड ट्रेम्बल्स एट द अप्रोचिंग इल. So she realizes what's coming and trembles at the disaster that awaits, right? So approaching ill का मतलब ये impending misfortune or loss. So यहाँ पर ये this line suggests the outcome will be negative, कि अब कुछ बुरा होने वाला है. Just in the jaws of ruin and Codil. So she is on the verge of total defeat. Specifically the Codil. Codil का मतलब होता है, it's a term in कोडाइल बोलेंगे इसको. इट्स अ टर्म इन द गेम ऑफ ऑम्ब्र दैट मीन्स अ टोटल लॉस. जैसे जैसे चेस में होता है ना, चेक मेट बोलते हैं, चेक एंड मेट. तो जिसने बोल दिया चेक एंड मेट, इसका मतलब वो जीत गया, टोटल लॉस हो गया. ऐसे ही इसमें भी ये टर्म होती है इस गेम में, ऑम्ब्र गेम में, मतलब ये इसका टोटल
लॉस है, अब इसके पास कोई रास्ता नहीं है कि हार जाएगी। एंड जॉज ऑफ रूल इज अ मेटाफर फॉर बीइंग क्लोज टू डिस्ट्रक्शन, अब ये हारने वाली है। ठीक है, तो कुछ विनिंग फ्यूअर ट्रिक्स के बाद ये पूरी पूरी हारने वाली है। एंड नाउ एज ऑफ्ट इन सम डिस्टेम्पर्ड स्टेट, सो डिस्टेम्पर्ड स्टेट का मतलब है अ डिस्टर्ब्ड और सिक नेशन। सो लाइक इन अ ट्रबल और अनस्टेबल गवर्नमेंट, everything depends on one small act or move, right? So the game is compared to politics now, which is mm, which is a mocking actually, right? On one nice trick depends the general fate. So a clever move can decide the outcome of for everyone involved. Belinda's win or loss depends on this trick. ठीक है, so there is a irony, or we can say a hyperbole, because that this line elevates the card move as if it were a matter of national crisis. तो ये भी एक मॉक एपिक है, इसको गेम को इन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि ये जैसे बिलिंडा का हार जाना कोई नेशनल क्राइसिस हो। ठीक है, एन एस ऑफ हार्ट्स स्टेप फोर्थ, द किंग अनसीन। स्टेप्स फोर्थ का मतलब यहाँ पर है कम्स इन टू द प्ले। अनसिन रेफर्स टू स्टिल हिडन इन हर हैंड, मतलब कुछ है अभी भी उसके कार्ड्स में उसकी तरफ जो भी अनहिडन है, मतलब सॉरी हिडन है, स्टिल हिडन है। ठीक है, सो बेलिंडा प्लेज द एस ऑफ हार्ट्स, राइट, हाउएवर शी स्टिल होल्ड्स द किंग कार्ड सीक्रेटली, कुछ तो सीक्रेटली उसके पास है जिनकी अभी भी गेम उसके हाथ में है। Lurked in her hand and mourned his captive queen. So the king of hearts still in her hand. Lurked का मतलब होता है hid secretly, तो कुछ तो उसने secretly छुपाया है। और mourned का मतलब आपको पता है grieved होता है। सो अभी भी किंग ऑफ हार्ट जो है, किंग का जो कार्ड है वो उसके हाथ में है। एंड इट इज़ इमेजिन्ड एज मॉर्निंग द लॉस ऑफ हिज क्वीन। सो देयर इज़ अ पर्सोनिफिकेशन एज अ किंग एज अ ग्रीविंग लवर, क्योंकि किंग उसके हाथ में है और जो क्वीन वाला जो कार्ड है वो उसका कैप्चर हो चुका है। तो किंग जो है वो मौन कर रहा है, रो रहा है, बेचारा बहुत परेशान है क्योंकि उसकी क्वीन जो है उससे दूर जा चुकी है। सो किंग is representing here as a grieving lover, right? He springs to vengeance with an eager pace. So the King of Hearts comes into play with intent of revenge. अब वो रिवेंज लेने आया है कि मेरी रानी को तुमने कब्जे में लिया है ना, अब मैं तुमसे आगे बदला लूँगा। एंड दैट इज़ वेरी ईगरली एंड स्विफ्टली। ठीक है, सो स्प्रिंग टू वेंजेंस का मतलब है सीकिंग रिवेंज एक्टिवली। एंड फॉल्स लाइक थंडर ऑन द पोस्ट्रेट एस। पोस्ट्रेट का मतलब होता है फॉलन फेस डाउन और पावरलेस। फॉल्स लाइक थंडर का मतलब है डिफीट्स विथ फोर्स। सो द किंग डिफीट्स द एस ऑफ हार्ट्स ड्रामेटिकली, लाइक थंडर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, राइट? तो थंडर जो है ना, लाइक थंडर, ये सिमिली है, इट हाइटेंस द ड्रामा, सब एग्जैजरेट कर रहे हैं सीन को। द निम्फ, निम्फ कौन है? बेलिंडा है निम्फ। द निम्फ एक्सल्टिंग फिल्स विथ शाउट्स द स्काई। सो एक्सल्टिंग का मतलब है रिजॉइसिंग ग्रेटली। सो बेलिंडा द निम्फ इज ओवरजॉयड बाय हर विन एंड शाउट्स विथ ट्रायम्फ। पूरा आसमान चिल्ला दिया उसने, आसमान पे चिल्ला दिया, लेकिन ना आसमान से उठा लिया, चिल्लाई है वो जीत से। शी शाउट्स विथ ट्रायम्फ। The last line for today's class is the walls, the woods, and the long canals replies. So her joyous voice echoes back from every surface. मतलब वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई हॉल में कि उसकी चिल्लाने की आवाज़ पूरी गूंज गई और हर तरफ से वापस पलट कर आ रही है, वॉल से, वुड से, एंड इवन किनाल से। So there is a personification of hyperbole and hyperbole as well, and nature responds to her joy. वो खुशी से चिल्लाई है और नेचर ने उसकी आवाज़ उसको दुगना तिगना मतलब कुछ मल्टीप्लाई किया है। तो नेचर ने रिस्पॉन्ड किया उसकी जॉय में, एंड एडिंग टू द एंड इट्स एडिंग टू द कॉमिक ग्रैंडर। ठीक है, सो इन दिस पैसेज
Pope humorously dramatizes a card game as though it's a scene from a grand war or a romantic tragedy. The Knave of Diamonds, right? Knave of Diamonds cunningly defeats the Queen of Hearts. That is very shocking to Belinda, who is so disturbed that she turns pale. She is on the brink of a Cordial. Cordial is basically complete defeat, right? But just like in a troubled kingdom where everything hinges on one decision, that one single trick, right? One single trick determines her fate. She plays the ace of hearts but still hides the king in her hand. That is her secret. This king imagined as a mourning the captured queen, the leaps into action. He defeats the ace in the dramatic moment of revenge. Revenge लिया है ना उसने, vengeance है ये. Belinda is now victorious and rejoices so loudly. She loudly that even nature seems to celebrate with her. So this is a brilliant example of mock heroic poetry, treating a trivial event with exaggerated seriousness to satirize vanity, romance, and aristocratic values. So let's stop here for today. So with this, we conclude today's class at line number 100 of Alexander Pope's The Rape of the Lock, Canto 3. We have explored the playful grandeur, sharp satire, and the poetic brilliance Pope employs to elevate a simple card game into an epic battlefield. In the next class, we will continue from here, from line number 101, right? And uncover more layers of mock heroic drama and social commentary. Till then, keep reading, keep revising. See you soon. Thank you.